Each change maker is a catalyst of change for the community he or she lives in. However, the campaign lets each change maker decide their own pace of change and does not expect extraordinary actions. Changemakers are the symbols of the campaign's commitment towards stimulating critical thinking. मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि जब उन्होंने बताया कि ये अभियान छोटे छोटे बदलाव की बात करता है कि मतलब छोटी छोटी कोशिशें ला सकती है बड़े से बड़ा बदलाव। अगर हम एक को बदलेंगे तभी परिवार बदलेगा और परिवार से समाज बदलेगा। और एक सबसे बड़ी बात है, बचपन से वही चीज़ दादी बोलते हैं ना, मम्मी उस समय से देखते आ रहे हैं, बट वो चीज़ को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है या उसको कोई बोलता नहीं कि गलत ही है, सही चीज़ करो, क्योंकि उनको ये सब लगता है ये देखी दिखाई चीज़ है, डेली देखते हैं तो उनमें कुछ डिफरेंस नहीं लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक चीज़ में आप इन्वॉल्व होते ही वो मेंटालिटी आपके अंदर आ जाता है एंड आप आपके काम के थ्रू घर में बाहर में वो सब चीज़ धीरे धीरे चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो वो चीज़ वो जो मैसेज है ना वो स्प्रेड होने लगता है। लड़कियों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार एवं हिंसा नहीं करेंगे। They represent possible alternative individual behavior, a force of change entirely voluntary in nature and yet capable of transforming the larger society. Perpetuate violence against women under any circumstances. Shall promote and protect the rights of women in order. कुछ दिनों पहले मेरे पास में 2 बच्चियां आई और उन्होंने नारी हिंसा पर अपने विचार व्यक्त किए। इनके विचार सुनकर मैं प्रभावित हुआ और मैंने भी एक निश्चय किया कि मैं भी इस संस्था से जुड़ूं और ये जो अभियान है इसको सफल बनाने में मेरा विभाग का जो योगदान है वो दूं। तो उसको सफल बनाने के लिए मैंने एक विभागीय आदेश निकाला और संस्था प्रधानों को ये आग्रह किया कि जब भी ये चेंज मेकर के सदस्य हैं आपके विद्यालय में पहुँचे तो इन्हें कुछ समय उपलब्ध करवाएं और ये बच्चों से जो भी बात कहे उनको ध्यान से खुद भी सुने और बच्चों को भी सुनवाने में सहयोग करें। The campaign has formed linkages with a number of organizations and individuals who joined the campaign voluntarily as alliance members. We have 2,000 who will be signing up as change makers. The allies include civil society groups, policy-making bodies, educational institutions, law enforcement departments, celebrities, professional associations, and mass media networks, among others. वीकेंड के माध्यम से जो असमानता का वातावरण है, लिंग भेद का वातावरण है, हमारे 100 विद्यार्थी एक साथ काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट लाडनू में, नागौर में और एक राजस्थान स्तर पर इतनी तेज़ी से दिखाई देगा कि एक ट्रिपल इफेक्ट की तरीके से ये काम करेगा, कैटलिस्ट की रोल की तरीके से काम करेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 का परिवर्तन सामने आएगा और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। पर्टिकुलरली टीवी रे एक्टिंग कला परे प्रति एक्टर गोटे चिन्हा परिचित मुह हो जाउछि, अति निजर लागे दर्शक मानक सहित से दर्शक मैंने निजर अति आपणार बोली भावती। तेणु से जिनसटा आमको साहाय्य करुच्ची। मु जितेबाला अन्य सांगे कथा हुए दर्शक मान सहित यही विषय कथा हुए वीकेंड जोटा कैंपेन से नारी मान प्रति हिंसा से जिनसटा से माने मु भावुची साधारण लोक अपेक्षा से बेसी भल भाव ग्रहण करती जेहेतु आम मुह गुड़ाक अति परिचित मुह चिन्ह मुह। Very often such an issue can be seen as a family issue, seen as an individual issue, seen as just as one family having problems, or even that this is what happens in a family or in a marriage and chalta hai and you need to accept it and keep going on. But because organizations like PCVC and the We Can campaign made it possible to think about lives which could have otherwise been invisible, could have been lives that could have been ravished with this kind of a violence in their lives, have brought
to light, a lot of knowledge, a lot of awareness that made us think and has challenged what we have been thinking all these years. Networking is very, very important. I don't think we can fight for issues like this if we do not join together as bodies that have a common mission statement, a common commitment to end violence against women. And I think this partnership of Madras Christian College and We Can campaign can help us to take this message forward to end violence against women. The We Can Alliance members take the message of the campaign forward in their areas of influence as well as outside. At present, the campaign is being implemented in 6 countries by an alliance of more than 2,500 organizations, individuals, and networks. Each alliance member is the public face of We Can in their own constituency. A wide variety of events, activities, and popular cultural tools are adapted and employed to increase the visibility and outreach of the campaign. Changemakers and alliance members from different communities and groups have constantly innovated within their local conditions to generate more interest amongst its immediate audience. The campaign's communication material is produced in more than 10 South Asian languages, while still maintaining a uniform level of messaging across 6 countries. Continuous interaction with mass media and use of related communication methods is an integral part of the campaign's strategy. More than 25 lakh changemakers have been mobilized in South Asia so far, and the numbers are growing. As the We Can campaign enters into the second phase, the changemakers shift their focus to deepening the change, building networks at different levels, and growing the campaign alliance. We Can campaign would reiterate forcefully that violence against women is not normal and not acceptable under any circumstance. People would be encouraged by the benefits of violence-free relationships and a more equal society. Individuals and communities would take responsibility to build violence-free lives, and women would feel confident to oppose violence. As the journey continues till 2011, We Can campaign hopes to reach out to more and more people who are committed to change and equality. People like you and me. We can. We can. We can. हमें यकीन है यह मुमकिन है.